इट्स आयुषी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, दिवाली है कुछ दिन में और मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ। आई नो, एक्चुअली आई वाजंट प्लानिंग टू अपलोड अ दिवाली डेकोर वीडियो एंड आई गॉट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट। प्लस मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इट हैज़ बिकम लाइक अ रिचुअल, यू नो, दिवाली डेकोर वीडियो डालना एवरी ईयर। 6 साल से मैं कर रही हूँ, तो आई थॉट ओके फाइन। बहुत ही लिमिटेड सप्लाई से मैंने बनाया, यू नो, आई यूज कलर पेपर, टिश्यू पेपर एंड यू नो पॉम्स जो भी मेरे पास सप्लाईज अवेलेबल थे उससे ही मैंने बनाया। मैं कुछ जाके बाई नहीं की हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए एंड टोटली लास्ट मिनट है। ऑल्सो स्किलशेयर इज स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्किलशेयर इन अ वाइल। प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्लिक दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन गाइज। बहुत जरूरी है बिकॉज आई डोंट हैव लाइक अ स्पेसिफिक डे अपलोडिंग का, तो जब भी वीडियो आएगा यू नो you'll get a notification, तो प्लीज वो बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। Give this video a big thumbs up and let's get started. For this DIY, you will need any color square paper. Measurements are written on the screen. Fold it into a cone shape. Stick it using white glue. Go for another color square paper a little smaller in size than the previous one. Fold it into a cone and stick it using white glue. Lastly, make another cone smaller than the previous two. We have cones in different sizes. Now take a round cardboard piece or cake tray. ये जो मैं यूज कर रही हूँ ये केक ट्रे है, बट अगर ये नहीं अवेलेबल है यू कैन इवन कट आउट अ सर्कल कार्डबोर्ड पीस। तो मैंने हर साइज का ऐसे बहुत सारे कोन्स बनाए हैं। आई मेड बंच ऑफ दीज कोन्स। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द बिगर कोन एंड स्टिक वन बाय वन लाइक सो ऑन द राउंड ट्रे। यू हैव टू कवर द एंटायर ट्रे विद दीज कोन्स। Now over this, I'll stick the smaller cones using white glue or hot glue. This may look complicated guys, but trust me, it is very easy that anybody can make. And उसके ऊपर all the tiny cones. सेंटर के लिए I have this old patch from my previous Diwali. या फिर दूसरा ऑप्शन है you can go for mirror. मैं पैच यूज कर रही हूँ, तो you have to stick this in the center. Now to give that festive vibes, I'm using these mirrors on all the edges of the cones and that's it. Best part about this DIY is it looks so time consuming but it is super easy and extremely beautiful. Put it on the center table या फिर on the floor या stick it on the wall and it completely changes the look. Such a great decoration idea. So excited to talk about Skillshare, who is also sponsoring this video. I am using Skillshare since a very long time and I have spoken about them in my previous videos as well. Skillshare is an online learning community where you can explore your passion, your creativity. It's a creative platform where you can take classes on different topics like graphic designing, DIY, crafts, editing, photography, and how you can start small business at home. There are many such inspiring topics. They keep launching new classes curated by industry leaders, so you always have something new and interesting to learn. So I personally love Skillshare. Art journaling, self-care journaling, you know, इस टाइप की classes मैं देख रही थी. Currently that I am more interested in is How to Become an Influencer by Sean Dalton. He shares like amazing ideas, how you can take videos on Instagram, किस टाइप के content post करने चाहिए, to be an Instagram influencer. इस तरीके के बहुत सारे classes available है Skillshare पे. It's Diwali guys and it's such a great time to explore your creative side, or if you know someone who would be interested, you know, you can give them as a gift. The subscription is very affordable. Skillshare's annual subscription is less than 2000 rupees guys, which is like less than 166 rupees per month. 166 rupees बहुत ही कम है, you know. DIY supplies भी नहीं आता है आजकल 166 rupees or 150 rupees के अंदर. You get complete access to the entire classes of Skillshare with no ads. Take this opportunity. I know this is going to be very helpful for you guys, and that is why I have something for you. There is a link in the description box. If you go through that link, you get free 1 month trial of Skillshare. Yes, take any classes for free for first 1000 viewers. So explore your creative skills and join now.
For this DIY, you will need any color paper napkin, tissue paper. Yellow or orange होगा तो much better. I'll be making tissue paper flower. So fold it into half. Cut out all the foldings so that each tissue paper is separated like this. कोई भी foldings नहीं है इसमें, सब separate है. Now make accordion fold. Use thread to tie a knot in the center. You can even use stapler and staple it in the middle section अगर thread नहीं है तो. Spread one end. Start separating each layer of tissue paper one by one, pulling it to the center. हर एक layer को ऐसे separate करना है. Repeat the same process on the other side. Separate each layer of tissue paper till the end. When you're done, this is how it looks. Trim off the excess and your tissue paper flower is ready. So I'll show you guys again. Same process hai and it's very easy. एक बार आइडिया हो जाता है कैसे करना है तो उसके बाद फटाफट हो जाता है. It looks time consuming but it is not. I made 17 of these and to be honest I did it while watching TV. Now you'll need 2 cardboard pieces of 30 cm each and 4 small pieces of 17 cm. I actually cut them out of a box. So I'll make swastik by sticking all the pieces together using hot glue or white glue. Measurement same होना ज़रूरी नहीं है. You can make swastik of any size. Stick tissue flower over the entire swastik using hot glue or any white glue. ये flowers के actually बहुत सारे DIYs बना सकते हैं. You can make तोरण, garland, wall decor बना सकते हैं out of these tissue paper flowers. Now ये optional है. I'll take some pom-poms and stick it in all the empty sections. हॉट ग्लू मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ सो दैट DIY जल्दी बन जाए. अदरवाइज वाइट ग्लू से थोड़ा टाइम लगता है ड्राई होने के लिए. एंड दैट्स इट. Reusable flower swastik is ready. It doesn't look like DIY at all. Perfect for any festive season. So yeah, I just love it. For this easy DIY, take any cardboard भी चलेगा. Then using glue, stick a bangle in the center. Using pearls, beads or rhinestone stickers like this. You can use anything to stick around the bangle. I went with white pearls. ये बहुत ही easily available है local market में. Or you can recycle bracelet, necklace, be creative as you want. Then I'll go ahead and stick some pom-poms. Pom-poms are like my favorite guys and मैं हमेशा ऐसे बड़ा सा पैकेट बाय कर लेती हूँ pom-poms का because you can make so many DIYs out of it. Buy this online या फिर local markets में भी मिल जाते हैं pom-poms. Cut it out in a circle and just remove the extra part. Now using mirror or plastic mirror, I'll stick them around the edges like so. And done. I made another one with same process in different color. You can leave it like this or you can add some beads on top of pom-poms using white glue. So festive and colorful. Light a candle or a diya in the center and that's it. All these DIYs I'm actually going to use in my house this Diwali. Absolutely love how they've turned out. That's it for this video guys. I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो. मुझे पर्सनली सारे DIYs बहुत पसंद आए. दिस इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट बिकॉज ये आई थिंक कोई भी फेस्टिव सीजन में ना ये स्वस्तिक अच्छा लगेगा.
डोर पे, रूम में, यू नो टेबल के ऊपर. या ऑल द DIYs आर लाइक माई फेवरेट. दिवाली है ही ऐसा, यू नो कुछ भी बनाओ बहुत मजा आता है बनाने में. एंड या दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग guys. Stay tuned for my studio tour that is coming this Diwali. I'll see you guys very soon. Bye bye. Keep inspiring.